Uh, Welcome everybody to our yet another edition of Community Fridays. And first of all, wish you a very, very happy new year to all our viewers and Dr. Bhupesh. Thank you, sir. I wish a very happy and warm new year to everyone, to the audience of Earthy Tales. So it's always a pleasure to connect with you and share our with small bits and bits of wisdom of Ayurveda. Thank you so much for the kind invite in Thank the you very new much. year. Yeah. So for our viewers, let me tell you that Dr. Bhupesh is the founder at Ask Ayurveda and is an expert Ayurveda doctor and also a naturopathy specialist. So, since the new year has started, we thought let's do something new in the 2022. I was just thinking, to talk about diabetes a little bit. So I wanted to dedicate the session on this diabetes, how to reverse your diabetes in the 2022 or this new year. This will be a great, gift from us to our listeners if we can give them some tips and helpful things, how to manage the diabetes. So I would want you to talk a little bit. Then I have received some questions in advance from our members. I will ask these questions to you. Yeah. So to all the viewers, again wishing you a very happy new year. And before we move on and understand what diabetes is all about, I think it will be a greatest gift to yourself if you pledge yourself to reverse it in 2022. That's why we have chosen this topic. And before we move on, there are a lot of misinformation among the people, among the masses, which eventually come from the doctors that diabetes is not reversible. So we will talk about a little bit about what are the types of diabetes very, very quickly, not getting into the medical and technical jargons of diabetes. What type of diabetes are there? Number one, and what kind of diabetes we can think of curing or managing with because at the end of the day these all are lifestyle disorders and that can be managed while adopting correct dietary lifestyle modifications. So there are 4 types of diabetes. Number one is gestational, which happens during the time of pregnancy. Second is pancreatogenic diabetes. This is a secondary diabetes, which is a result of pancreatitis. So pancreatitis is a condition of pancreas. So once your endocrine part of pancreas gets damaged, then the inability of pancreas to produce insulin comes into the way. Third one is type 1, which is a juvenile or childhood type of diabetes, which starts from the very start of life, say 6 or 7 or 8 years, when the parents visit to a pediatrician or endocrinologist, they get to know their ward is having type 1 diabetes, which happens quite early in the life of a person. The fourth one is type 2 diabetes, which is almost like over 95% of the cases which we see of diabetes. But the good part is this disease can not only be managed, this can be entirely reversed with the help of Ayurveda. And even if I go a step ahead and tell you that this can be cured with correct dietary lifestyle modifications. So before we move on and tell you that how this is reversible, how a person can think of reversing it. So first we need to understand both the type of diabetes. Type 1. So एक छोटा सा suggestion मैं यहाँ पे और दूंगा. Talk about gestational diabetes. So gestational diabetes happen during the time of pregnancy. What is happening these days? Every
especially this is the scenario of Indian upper urban class society, where maids and servants are there and who come, and pregnant ladies do not do any work. There can be a number of reasons for that. So this is the type of diabetes which is quite prevalent these days. So if any pregnant woman or any person who is with us right now knows a pregnant lady, they should ask them to work a little bit, to do household work, because then it will help them to control their body weight, right? So if they control their body weight, there are greater chances that they won't be having a gestational diabetes. So now coming back, before we move on to types 2 diabetes, which is curable in nature, and how this can be cured, I will tell you very shortly. So we need to discuss type 1 diabetes as well. Type 1 diabetes, which happens with the kids in the very early start of their life. उसको थोड़ा सा समझने की बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ. एक ये मान लीजिए लॉक है और ये लॉक है और ये की है. की यानी इंसुलिन बॉडी में बन ही नहीं रहा है, तो वो जाके सेल के पास जाता ही नहीं है और ग्लूकोज उसकी यूटिलाइज नहीं होती है. What happens in type 2 diabetes, key is there, means insulin in producing, but the lock is already very clogged. It can be due to fat, it can be due to you can say a grease gets deposited on this lock. So the moment this insulin goes there, it doesn't get any way, it doesn't find any way to get it inside the cell and body use it. इस सारा का सारा प्रोसेस टाइप 2 डायबिटीज को अगर हम इसकी संप्राप्ति यानी इसकी फिजियोलॉजी अगर हमने इसको रिवर्स कर दिया, टाइप 2 डीकोड हो गई, डायबिटीज हो गई. So we all read authors and medicine books from the Western authors. With all due respect to the science the Western world has given us, we should not give up our own science as well. So we seldom use the word yoga. We use yoga. We use not Ayurveda. We use Ayurveda. So even our brand is as Ayurveda. We're trying to become a bit modernized, right? So in Ayurveda, type 2 diabetes is correlated with Kafaj Vyadhi. Kafaj means excess of meat, excess of fat are deposited in your body. The moment you remove that fat, excess fat, the type 2 diabetes is very much curable or very much reversible. And I'm not saying, I'm being an Ayurvedic doctor, I'm not saying that you need to trust us. There are evidence, there are empirical evidences, and there are lots of Western authors who are MD physicians who have produced such evidences, empirical data that have advocated that type 2 diabetes is absolutely reversible. Absolutely reversible in nature, right? And if viewers want to read more about some authentic authors about you, I would definitely like to name some of the authors which from whose learning I have adopted in my practice as well. Jocelyn Fung is there, who is a very renowned practitioner and who has worked a lot in reversing type 2 diabetes. Dr. Neil Bernard offers an exclusive program of reversing diabetes. In India, we have proudly say that we have adopted similar kind of program. And I started working on diabetes from the year of 2016. And since then, we proudly have reversed the diabetes of scores of people who are completely, I don't want to brand myself, advertise myself here, but just to tell you, our viewers, that this is something we're really proud of it. I'll share a very anecdote with you. When I was in final year of my BMS, Bachelor of Ayurveda Medicine and Surgery, my teacher came and told the entire class that type 2 diabetes can be managed only, it cannot be cured. But science does not stop at one point. There are stem cell therapies that are there in place which can even reverse type 1 diabetes. But since we are talking as a normal person today, so what kind of diabetes is reversed? Again and again, we have spoken that type 2 diabetes can be reversed, and how it can be reversed.
let's do small set which I usually adopt for my patients. So I work with the three pillars of Ayurveda: diet, lifestyle, and medicines. Medicines vary from a person to person. So diet and lifestyle play huge role, huge role. So few dietary tips that I want to give to a person who is struggling right now with a type 2 diabetes, that they need to follow their health pyramid very correctly. Health pyramid is something which is very close to my heart as a practitioner. So the moment you start your day, have your dense calories from the very start in the day. As you progress during the day, have very light meals in the night. So this is the number one key sutra that you need to adopt for yourself. If someone is listening struggling with type 2 diabetes, this alone can take care of your fasting sugar. So if you are having a very light dinner in the night, automatically your fasting will come under control. Another concept is intermittent fasting, so which is a very fad word these days. Again, there is a sutra in Ayurveda which is called Langhanam Param Oshadam. So Langhan is fasting. Param Oshadam सबसे अच्छी medicine है. Langhanam Param Oshadam. So 40 के बाद बीएमआर थोड़ा स्लो हो जाता है. सो अगर कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग करे, हफ्ते में एक दिन सिर्फ गर्म पानी से या किसी एक आधा फ्रूट छोटा मोटा कुछ ले सके, तो मेडिसिन ये इंटरमिटेंट फास्टिंग अपने आप में एक मेडिसिन का रोल करती है. नरेंद्र जी, मैं ही बोली जा रहा हूँ, क्या कोई क्वेश्चन है? नहीं, तो मतलब आप, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम श्योर लिसनर्स जो हैं, व्यूअर्स हैं, वो काफी एंजॉय कर रहे होंगे. मैं खाली आपसे ये पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब कि आपने जो बताया था कि जेस्टेशनल डायबिटीज जो प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है, सो वंस दैट प्रेगनेंसी पीरियड इज ओवर, तो ये डायबिटीज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है या फिर उसके बाद में ये हमारे पास रह जाती है? सो क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे वेट ऑटोमेटिकली गेन होता है. तो अगर तो वेट चला जाए उसके बाद, इस तरीके की डिलीवरी के बाद, फिर तो ये कंट्रोल में आ जाती है. बट अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत सी मेडिकल प्रैक्टिस में, हमारी में तो मतलब बहुत सी लेडीज फीमेल आती हैं और वो बताती हैं कि प्रेगनेंसी के बाद मुझे हुई थी, प्रेगनेंसी के बाद ही मुझे थायराइड हुआ था. सो उन्होंने इस तरीके का लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया है कि उसी के बाद वो उसी को कैरी करती रही. सो प्रेगनेंसी के बाद ये अपने आप ठीक हो जाती है. बट बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि जेस्टेशनल टाइप जो जेस्टेशनल डायबिटीज है वो टाइप 2 में कन्वर्ट हो ही जाती है. इवन टाइप 2 डायबिटीज अगर हम, इफ वी डू नॉट स्टॉप इट एट अ राइट टाइम, इवेंचुअली अ पर्सन who gets diagnosed with type 2 diabetes will be having type 1 diabetes. बाद में उन्हें भी इंसुलिन लेना पड़ ही जाता है. और इंसुलिन अगर एक बार किसी ने लेना शुरू किया तो उसका वेट लॉस भी आसानी से फिर नहीं होता, क्योंकि इंसुलिन इज द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट इन वेट लॉस. फिर ये एक चिकन एग की स्टोरी हो जाएगी. आपको शुगर भी मेंटेन करना है, आपको वेट लॉस भी करना है, और दोनों हो नहीं पाते अनफॉर्चुनेटली एक साथ. सो द बेस्ट टाइम टू रिवर्स डायबिटीज इज टुडे. Okay. That's why I chose this topic. Start from today. Very nice. तो diet. तो 3 मेरे पास क्वेश्चंस हैं जो अभी मैं पढ़े हुए थे मेरे पास, जो हमारे व्यूअर्स ने भेजे थे. तो वो 3 क्वेश्चन मैं इसलिए अभी आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ कि 2 का तो जवाब आपने ऑलमोस्ट अभी दे दिया अपनी डिस्कशन में, और जो एक रह जाएगा उसको आप फिर रिजॉल्व कर दीजिए. एक तो ये है कि व्हाट टाइप ऑफ डायबिटीज कैन बी रिवर्स्ड. So that you have told us that type 2 भी जो है, not only can it be managed but can be reversed also. Absolutely. So gestational diabetes also can be reversed. Yes. Type 1 के बारे में आप बता दीजिएगा whether it can be reversed or how to be manage that. दूसरा सवाल ये था, if a person is insulin dependent diabetic for over 15 years, 15 साल से इंसुलिन ले रहे हैं और डायबिटीज की वजह से, सो इज इट पॉसिबल टू स्टॉप इंसुलिन आफ्टर सो मेनी इयर्स? आप कुछ प्रैक्टिसेस के बाद में कुछ वो डिसिप्लिन जो बता रहे हैं, 3 प्रिंसिपल्स जो आपने बताए, कैन इंसुलिन आल्सो बी स्टॉप्ड
So Well, unfortunately, in most of the cases, I talk about over 90%. In over 90% cases, it cannot be, the person will not be able to stop insulin. However, they can be able to curtail down the doses of insulin. So what I have seen in my practice is people from 20 units to even have gone to 8 units. okay. Just after doing some changes, like I ask them to adopt certain yogic asan, certain meals. So अगर meals की बात जब हम कर रहे थे तो एक कैलोरीज का इसमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है. When I see calories, it doesn't mean that you need to curtail down on your diet unless if you are very overweight, right? Healthy calories का source हमें identify करना पड़ेगा. For example, a pizza has 1500 calories, whereas a desi ghee, organic desi ghee, if I specifically mention it, has 15 spoons of desi ghee has 1500 calories. But what is pizza healthy? Well, if for a person who is having diabetes, pizza is absolutely has refined carbohydrates in it, so it's not healthy, right? So हेल्दी कैलोरीज का सोर्स कहाँ है वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. सो लो कार्ब्स की रिफाइंड कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत ज्यादा बदनाम कर दिया गया है. इतने बुरे नहीं होते वो, 3:2:1 की रेशो में फिर भी हमें चाहिए होते हैं. सोर्स देखिए, वी नीड टू आइडेंटिफाई द सोर्स फ्रॉम वेयर द कार्बोहाइड्रेट्स आर कमिंग ऑन योर प्लेट्स, right? Choose which is coming directly from your mall, from farms, not from the malls. और उसी कैटेगरी में है रिफाइंड ऑयल्स, चाहे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है चाहे रिफाइंड ऑयल्स है, हमें वो सब नहीं खाना है. हेल्दी सोर्स फैट का हमें चाहिए, फैट को हमें बदनाम नहीं करना है. देसी घी खाइए, आप बिल्कुल खा सकते हैं, राइट? घृतम भोजनम नास्ति, घी के बिना भोजन नहीं है, ये बात बिल्कुल आप ध्यान में रखिए. घी इज एन एंटी एजिंग एंड इट्स अ सोर्स ऑफ, और डायबिटीज के पेशेंट को हेल्दी सोर्स ऑफ फैट जरूर चाहिए होता है. चाहे वो ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी में, ड्राई फ्रूट्स आर डेंस कैलोरीज, वो काफी समय तक आपकी हंगर पैंग्स, हंगर कैलोरीज हैं, उन सबको कंट्रोल में रखने में सक्षम है, आपकी बॉडी को एक्सपोर्ट देने में भी सक्षम है. सर्टेन टाइप ऑफ नॉन वेज मील्स शुड बी अवॉइडेड, लाइक mutton should be avoided, pork should be avoided. These types of meals should absolutely be avoided if someone is having type 2 diabetes. अब थोड़ी सी लाइफस्टाइल की बात कर लेते हैं. So from last 2 years our lifestyle has gone totally haywire kind of a thing. तो दिन में सोना नहीं चाहिए, day sleep is totally prohibited. If someone is struggling to maintain a healthy weight, make sure they lose weight, and the moment you reverse your weight or curtail weight, lose your weight, the chances of type 2 diabetes, अभी किसी ने पूछा है कि what is the way to keep it at bay. So healthy weight आपको maintain करके रखना है, बिल्कुल healthy weight the moment you become, because these are comorbidities, they exist together. डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सब का सबसे ज्यादा कारण ही वेट है. तो अगर आप हेल्दी वेट को मेंटेन करे हुए हैं, आपको पेट से रिलेटेड यानी डायबिटीज, जीबी स्टोन या पेट की कोई भी इस तरह की फैटी लीवर है, इस तरह की कोई भी बीमारियां आपके नजदीक नहीं आएंगी. और ऐसे खाने स्पेसिफिकली मैं मेंशन करता हूँ, ऐसे खानों से दूर रहें, लाइक टारो, ब्रिंजल, पोटैटो, पी, इस तरीके के. ये जो एवरी मील, एक सिंपल सा सूत्र मैं यहाँ पे दे देता हूँ व्यूअर्स को, जिस भी खाने से म्यूकस बने, यानी जो खाना चिपचिपा हो, वो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिकॉज देन इट विल गो इनटू द बॉडी, इट विल फॉर्म, आपकी गट को क्लॉग करेगा, ये रुकावट बनेगा, काफी समय तक पड़ा रहेगा वहां पे, और सेल पे, जैसे मैंने समझाया था कि जाके सेल पे काम नहीं करेगा, सेल के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, जिससे इंसुलिन अंदर नहीं जाएगा और ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होगा. दैट्स इट. कोई और क्वेश्चन है तो अभी ले सकते हैं सर. जी, वो सवाल पूछ रहे हैं कि व्हाट इज टारो, टारो क्या है? टारो क्या है? अरबी. अरबी, अच्छा, ओके, अरबी. ओके, सो एक सवाल है ये जो पूछ रहे हैं कि आई हैव बीन वेरी कॉशियस एंड डोंट ईट स्वीट्स एट ऑल, बट स्टिल माय ब्लड शुगर लेवल्स आर ऑलवेज हाई. तो मीठा खाना खाते हुए भी लेवल्स हाई हैं, तो सिर्फ फैट ही उसका दूसरा कारण हो सकता है, कुछ और भी है इसके पीछे जो?
डेफिनेटली ये कारण है, बट अगर इनके ये स्वीट्स बहुत ज्यादा खाते हैं और फिर भी शुगर, स्वीट्स नहीं खाते और फिर भी शुगर बढ़ा है, तो इन्हें अपने कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस देखने चाहिए। क्या ये ब्रेड खा रहे हैं, क्या ये अच्छा। बिस्किट खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, रस्क खा रहे हैं? सो अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया आर national drink has tea has become our national drink. जी। The moment we wake up in the morning, we start our day with tea. And I do practice in northern part of India, so we have a super Punjabi culture here. So cha de naal we have biscuit, rusk, right? So उसके so these all are bad forms of carbohydrate. तो आपके कार्बोहाइड्रेट का सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्वीट्स नहीं भी खा रहे हैं तो द पर्सन स्टिल नीड्स टू मेक श्योर कि सोर्स कहाँ है, सोर्स कहाँ से आ रहा है उसका। जी जी। सो एक चेक ये है, बाकी तो I mean, if somebody has specifically, I will be happy to know their dietary lifestyle कि कहाँ पे गैप कहाँ पे है, then I can advise according. श्योर। सो हमारे Happy to व्यूअर्स check. भी देख रहे हैं, और इनकी अगर कोई स्पेसिफिक इश्यूज और प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू डायबिटीज, तो they can reach out to Dr. Bhupesh directly. Absolutely. And if you are a Earthy Tales Circle member, we have special arrangements on consultation with Dr. Bhupesh also. साहब ये बता रहे हैं कि the stress, tension, obesity, lack of sleep, are these Absolutely. some reasons for high blood sugar levels? Are these the reasons? Absolutely. This is I'm recalling a famous quote of mine here. Stress is causing my hairs to gray, and graying of my hair is giving me stress. So it becomes a chicken egg story. Unfortunately, in modern practice, wherein usually so many OPDs are, so many patients walk in the chamber of a doctor usually avoid speaking on or discussing with the patient on this aspect. Stress is a very important trigger factor that can trigger your sugar levels. नीचे भी कर सकता है, ऊपर भी कर सकता है एकदम से। So अगर टाइप 2 के पेशेंट्स में यूजली स्ट्रेस जो है शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है, टाइप 1 में डिक्रीज भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। सो यू नीड टू वॉच आउट, यू नीड टू स्पीक टू योर बॉडी व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस यू आर हैविंग। इज इट अ फिजिकल स्ट्रेस? देन फॉलो द मंत्र ऑफ रीड, रन एंड रिलैक्स। गो read, go, run, and go relax. Right. This is a 3R formula that works. You need to find out, because it's like no one shoe fits to all. What kind of stress, work related, if you are having, and on what days you feel yourself stressed? Are you feeling stress on Mondays, which most of my corporate patients feel? Right. If Monday is causing you, then prepare yourself Monday from the very start of your weekend. It's always good to have your umbrella open before it's raining outside. So stress आपको किस तरीके का, आप वो फाइंड आउट कीजिए, योगा कीजिए, बहुत हेल्प करता है। बहुत मैंने देखिए, आयुर्वेद की एक ब्यूटी है, चाहे अमीर पेशेंट है या मध्यम वर्गीय या गरीब है, हर तरीके का इस व्यक्ति से अडॉप्ट करके अपनी किचन से भी लोगों ने कोरोना ठीक किया। राइट। सो इसी तरह डायबिटीज को भी आप ठीक कर सकते हो, बिल्कुल ठीक कर सकते हो। मैं मतलब if viewers can see the confidence in my eyes if I'm speaking this, right? We have empirical evidences against whatever I'm saying. तो आपका वर्कआउट किस तरीके का है वो आपको डिफाइन करना है। एंड मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन हर किसी के को लोगों को बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। सो अगर नहीं भी है, डू एक्टिविटीज दैट हेल्प यू टू एंजॉय योर डे, डेली डे। वो आपकी बॉडी में सेरोटोनिन भी रिलीज करेगा, आप हेल्दी रहेंगे, अपने परिवार के साथ आप एक अच्छा माहौल बना के रखिए। स्ट्रेस के फैक्टर जो भी हैं, कोई व्यक्ति है या कोई मसला है जो आपको स्ट्रेस देता है, सो आपको उसको दूर करना है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, आपको कॉज को हटा देना। सो अगर आप स्ट्रेस को दूर रखेंगे, because in my practice I have seen even people who are younger, who are employed in big corporate houses, they are also getting diabetes, and due to diabetes it is impeding their quality life, quality work, and it is giving them the depression as well. So आपको इन सब चीजों को दूर रखना है। स्ट्रेस सबसे everything is interrelated. Absolutely, sir. Absolutely. It's a chicken egg story. One bad thing is leading to another bad thing. Especially in the times of these new variant Omicron, which has come in,
in large waves. It's a wave of cases which is happening. So I think अपनी जो comorbidities हैं उनको बचा के रखना चाहिए, उनको थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल होना चाहिए जिनको ये दूसरे इश्यूज साथ में हैं. Absolutely, sir. Becomes more important to give stress on reversing the diabetes. So काफी अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे बात करके. So एक बात तो ये समझ में आई कि it's not only manageable, it is reversible also, and we have to take care of our diet, our physical exercise, and maintain that reverse pyramid for the diet. Basically, breakfast should be heaviest and dinner should be the lightest. और कुछ वो फूड आपने बताया जिनसे लेस बनती है, वो आपको अवॉइड करने हैं. बैंगन हो गया, अरबी हो गई, और ऐसे भिंडी, कुछ ऐसे कुछ फ्रूट्स भी आते हैं या सिर्फ फ्रूट के लिए आप एक चेक लिस्ट रख सकते हैं. तो हमें आम को अवॉइड करना है. ओके. हम अंगूर को अवॉइड कर सकते हैं. Okay. ये सब जिनका हाई ग्लाइसेमिक डाइट्स है, बट स्टिल फ्रूट्स still are way better even if they have high glycemic food than refined carbohydrate. ब्रेड से अच्छा आपके लिए फ्रूट है. राइट. तो अभी किसी ने पूछा कि ये हमको बिस्किट्स और मट्ठी नमकीन ये भी अवॉइड करना चाहिए, तो ये भी कुछ इसमें जितना हो सके अगर जितना. और रिफाइंड ऑयल, क्योंकि बाजार की मार्केट की रिफाइंड ऑयल्स की ही बनी होती हैं. अगर आप घर पे बना सकें उसे सरसों के तेल में, चलिए तेल के लिए भी हम एक सेशन यूज करेंगे, कभी बहुत एक सेशन इस्तेमाल करेंगे तेल के लिए कि कौन सा तेल यूज करना चाहिए. सो एक ही बार करेंगे, दोबारा मत करें, वरना वो डीऑक्सीडाइज हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज चली जाती है. तो एक ही, अगर आपको शौक है मट्ठी वगैरह बनाने का, एम्प्टी स्टमक तो फिर भी मत लीजिए. शाम के टाइम, इवनिंग के, when you are sipping your coffee or tea, you can have it. Okay. Yes. Okay. और रिफाइंड ऑयल्स में बिल्कुल ना बनाओ. रिफाइंड ऑयल्स में बिल्कुल ना बनाएं. ओके. तो इसका मतलब बाजार से तो लेना थोड़ा सा अवॉइड करें तो बेटर है. नहीं, अच्छे सोर्सेज हैं. लाइक यू गाइज आर डूइंग वंडरफुल वर्क. व्हाटएवर यू आर सर्विंग सम कोल्ड प्रेस ऑयल्स, या जो भी आप लोग कर रहे हैं. अगर आप कोई यहाँ पे पैसे खर्च करना, मैं बोलूंगा ज्यादा अच्छा है, बजाय आप डॉक्टर्स के कैबिन में इतनी देर वेट करते रहें और वो सब करें. उसकी बजाय अपनी हेल्थ पे 30-40% हर महीने के बजट को थोड़ा बढ़ा दें. बिकॉज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, so today I met a patient in my OPD. He told me that best investment in his 30s he could have done was on his health. He neglected it because of, had a very troubled lifestyle, and this is something which is going, and he has all the comorbidities related to the diabetes. So invest in your health. Make a mantra in 2022 along with the reversal of diabetes कि मैं अपना ध्यान रखूंगा, अपनी हेल्थ में हेल्दी इन्वेस्टमेंट करूँ. Thank you very much, Dr. Saab. And viewers, the time is up now. We have in fact exceeded by a minute. So we will catch up on another Friday with another session on another topic. Till then, have a great year ahead. Thank you very much. Thank you, sir. Namaste. Thank you.